Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you lecture number 6 and our topic is Nature Signals from your book We Learn English, Class 7 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. It is said that dogs have the ability to sense disasters as well as spirits. ऐसा कहा जाता है कि डॉग्स जो हैं वो उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी ख़तरे को पहले से भांप लेते हैं. A woman once had a dog that would tremble violently and did not go out for its morning walk on a particular day. एक औरत के पास एक दफ़ा का जिक्र है कि एक डॉग था जो कि बहुत बुरी तरह कांप रहा था और उस पर्टिकुलर डे पे वो जो है मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गया था. उसके बजाय वो एक टूरिस्ट है और दीवार पे घूर रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो. इट वॉज अफ्रेड टू बी लेफ्ट अलोन एंड केप्ट इन द ऑन द फॉलोइंग इट्स केप्ट ऑन फॉलोइंग इट्स ऑनर. वो उससे ऐसा लग रहा था वो उस अकेला छोड़े जाने से खौफ खा रहा था और वो अपने ओनर के साथ साथ घूम रहा था. इवेंचुअली ट्रेमर्स शुक द सिटी एंड एन अर्थक्वेक ऑफ माइल्ड इंटेंसिटी वाज रिकॉर्डेड. जबकि उसी वक्त जो है एक छोटा सा अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया था. विदाउट अ डाउट द डॉग वाज अ सेंसिटिव क्रिएचर and showed signs of nervousness at the sound or sight of strange noises or objects. But could the dog actually forecast an earthquake before a human being could? Perhaps yes. बिना किसी शक के ये कहा जा सकता है कि वो डॉग जो है एक सेंसिटिव क्रिएचर है और उसने जो है घबराना शुरू कर दिया जब उसे अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हुई और स्ट्रेंज नॉइजेस और ऑब्जेक्ट्स यानी कि हर चीज़ का हिलना जो है उसे दिखाई दिया. बट को क्या ऐसा हो सकता है कि डॉग्स जो है वो इंसानों से भी पहले जो है अर्थ को जो है फोरकास्ट कर लें. अकॉर्डिंग टू नेचर मैगजीन ants and bees become restless at the slightest change in the weather. नेचर मैगजीन के मुताबिक चूंटियाँ और मक्खियाँ जो हैं वो बेचैन हो जाती हैं जैसे ही हल्का सा भी वेदर के अंदर जो है चेंज आ जाता है. देयरफॉर दे माइट बी एबल टू pick out unusual movements leading to natural disasters. Therefore they might be able to जैसे इसका मतलब है कि वो पिक कर लेते हैं अनयूजुअल मूवमेंट्स को इंसानों से ज़्यादा जल्दी जो कि नेचुरल डिज़ास्टर यानी कुदरती आफात की निशानियाँ होती हैं. सम क्रिएचर्स आर गिफ्टेड विद द एबिलिटी टू पिक अप साउंड्स और वाइब्रेशंस. कुछ क्रिएचर्स मखलूक़ात ऐसी होती हैं जो कि वाइब्रेशंस और साउंड्स को पिकअप कर लेती हैं. ऑल्सो नोन एज इंफ्रासाउंड्स. साउंड्स दैट कैन नॉट बी हेard बाय ह्यूमन. ऐसी आवाज़ें जो इंसान नहीं सुन सकते. दिस इज़ वाई वी सी बर्ड्स और एनिमल्स मेकिंग अनएक्सप्लेन नॉइजेज और शोइंग रेस्टलेस बिहेवियर. कभी कभार हम देखते हैं कि अचानक से परिंदे जो हैं वो अपनी जगह से उड़ जाते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें निकाल रहे होते हैं और अचानक घबरा जाते हैं. अनयूजुअल बिहेवियर होता है उनका बहुत ही. सो दैट दिस इज़ वाई कि वो उन्होंने कुछ ऐसा देखा होता है, कुछ ऐसा सुना होता है जो आम इंसानी कानों से हम नहीं सुन सकते. विच एबिलिटी डू डॉग्स हैव? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.